Hello dear students, in this video we are going to do binomial distribution. Scoring topic है और very easy topic. So let's do exercise 8.1 binomial distribution. So we will define a formula for this binomial distribution. See, capital X follows binomial distribution with parameter NP. N is number of trials और P is probability of success. यहाँ पे Q is probability of failure है और that is equal to 1 minus P. P plus Q will be equal to 1. Here this N is what number of trials, P is a probability of success. Capital X discrete random variable है, so this capital X follows binomial distribution with parameter NP. इसमें P is probability of success और Q is probability of failure. ये रिलेशन है 1 minus P. P plus Q will be equals to what? 1. So here probability P of X is equal to small x, that is equal to NCX P raised to power X into Q raised to power N minus X. ये formula है. Okay, here X is taking value 0, 1 to up to N. 0, 1 to up to N. Then so this is a formula. Now again E of X, that is expected value. So formula for this is equal to, यहाँ पे लिमिटेड फॉर्मूले है NP और V of X. V of X that is variance and it is equal to what? NPQ, and standard deviation SD is equal to square root of Vx which is NPQ. तो इतने फॉर्मूले आपको याद रखने हैं. Now let's do exercise 8.1. That is first question. A die is thrown 6 times. If getting an odd number is success, find probability of 5 success, at least 5 success or at most 5 success. So here a die is thrown 6 times. मतलब number of trials हो गए इसमें 6. In every ये it will follow a Bernoulli trial. बर्नौली ट्रायल में क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरी ट्रायल विल बी सेम, दैट इज अ कांस्टेंट. हम 6 टाइम्स वी आर टॉसिंग अ कॉइन, ओके, वी आर थ्रोइंग अ डाई 6 टाइम्स, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स होगी 6. तो हर एक ट्रायल में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सेम ही रहेगा. सो here n will be equal to what? Number of trials, and that will be equal to what? 6 in this case. We are going to solve first question, that is question number 1. See exercise 8.1 question number 1. So question number 1, here a die is thrown 6 times. अगर हम die, if suppose for the first trial, so what are the outcomes? 1 2 3 4 5 और 6. तो 6 आउटकम्स होते हैं. इसमें जो आउटकम्स ऑड होते वो है 1 3 और 5. तो हियर नंबर ऑफ आउटकम्स विच आर ऑड, so that are equals to what? 3, and total number of outcomes are 6. तो इसमें probability of success P will be equal to what? 3 upon 6 होगा, and that is equal to what? 1 upon 2. ये probability of success होगा. और probability of failure क्या होगा? Q will be equal to, therefore Q will be equal to 1 minus P, and that is equal to what? Again 1 by 2. और हमने we are thrown this dice how many times? 6 times. तो n will be equal to what? Number of trials, that will be equal to what? 6. So number of trials will be equal to 6. अब क्या करना है? Here capital X is a discrete random variable. It is number of success, yeah, number of times we are getting odd numbers. So number of success, you can say number of
success. Okay, what is this capital X? It is number of success. And here capital X follows binomial distribution. Capital X follows binomial distribution with parameter NP. So probability P of X will be equal to NCX P raised to power X into Q raised to power N minus X. यहाँ पर N will be equal to what? Here N is equal to what? 6, or probability is what? 1 upon 2. So let's substitute these values here. So therefore P of X is equal to, यहाँ पे P और Q same है. So in such case, listen, N is equal to what? 6. 6Cx P is 1 upon 2 raised to power X, और Q भी also 1 upon 2 raised to power N minus X, मतलब 6 minus X. तो ये 1 by 2 raised to power X और 1 by 2 raised to power 6 minus X. It will give us 6Cx into 1 upon 2 raised to power how much? 6. It is equal to 6Cx 64. So probability P of X you are getting is equal to how much? 6Cx upon 64. अब फाइंड करना है केसेस. फर्स्ट केस क्या है? फर्स्ट सब क्वेश्चन 5 सक्सेस, मतलब एग्जैक्टली 5 सक्सेस. सो फर्स्ट सब क्वेश्चन इज एग्जैक्टली 5 सक्सेस, मतलब probability of X is equal to 5 number of success, which is equal to 6Cx, मतलब 6C5 upon ये constant 64 आया इधर, which is here NCR is equal to NC N minus R होता है. तो यहाँ पे 6C5 will be equal to 6C1 आएगा, 6 minus 5 and upon 64. और NC1 is equal to what? It is equal to N. ये होगा 6 upon 64. इसको हम रिड्यूस करेंगे तो 3 upon 32 आंसर you will get. Yes, this is the answer. 3 upon 32. तो 3 upon 2 raised to power 5 लिख सकते हैं. Then at least 5 success. At least. So at least 5 success. मतलब see here second is what? At least 5 success. Okay, at least 5 success. So at least 5 success means probability of X at least 5 success means either X is greater than 5 or is equal to 5. That means maximum क्या है? 6, because 6 number of trials are there. So P of X is equal to 5 plus P of X is equal to what? 6 मिलेगा. Therefore it is, इसी फार्मूला में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. What formula you are getting? ये, this formula you are getting. P of X is equal to what? 6Cx upon 64. ये फार्मूला हमने कंस्ट्रक्ट किया है. तो x इज इक्वल टू 5 वी विल टेक. 1 अपॉन 64 जो है कॉमन लेंगे और x इज इक्वल टू 5, मतलब 6C5 प्लस 6C6 आएगा. कीप इन माइंड दिस NCN that is equal to N 1 or NC0 is also equal to what? 1. So what will be this 6C6? It is equal to 1 और 6C5 हमने just now we have done 64 है और ये 6C5 मतलब 6C1 plus 6C6
जिसका वैल्यू आएगा 1, एंड हियर 1/64 इंटू 6 प्लस ये आएगा 1, which is 7/64. This is the answer. 7/64 या 7/2⁶, ये है एटलीस्ट 5. देन नेक्स्ट इज व्हाट? एटमोस्ट 5 सक्सेस. एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम 5 सक्सेस. सो थर्ड वन इज व्हाट? एटमोस्ट 5 सक्सेस. ओके, एटमोस्ट 5 सक्सेस. Atmost 5 success, that is probability of x less than or equal to 5. ओके, या तो 5 मैक्सिमम या उसके लेस. तो ऐसी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे. यहाँ से 0 से लेके 5 तक करना होगा. सो इंस्टेड ऑफ दैट 1 माइनस पी ऑफ एक्स ग्रेटर दैन 5 कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है, विच इज इक्वल टू 1 माइनस ग्रेटर दैन 5 मतलब एक ही है. पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट? 6, विच इज 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6. तो ये है हमारा, दैट इज 1/64 इंटू व्हाट? 6c6, विच इज 1 माइनस ये 66 होता है 1, इट इज अपॉन 64, एंड इट विल बी 63 डिवाइडेड बाय 64. डन. 63 डिवाइडेड बाय 64. तो ये है तीनों सब क्वेश्चन, दैट इज गेटिंग एग्जैक्टली 5, गेटिंग एटलीस्ट 5 और गेटिंग एटमोस्ट 5. सो ऑल 3 केसेस वी हैव डिस्कस. फिर उसके बाद सेकेंड सब क्वेश्चन. A pair of dice is thrown 4 times. A pair of dice is thrown 4 times. If getting a doublet, मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, these are what? Doublets. Getting doublet is considered as success. Find probability of 2 success. Number of success 2. So let's see question number 2. So question number 2 will do. Getting doublet is a success. Here question number 2, 2 dice are thrown, a pair of dice are thrown. तो इसमें सैम्पल स्पेस ऐसा आएगा 1 1 2 1 1 1 6, और यहाँ पे लास्ट में 6 1 2 6 6. सो टोटल 36 नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स आएंगे. और इसमें डबलेट क्या है? ये डायगनली 1 1 2 2 3 3 4 4 और 6 6, ये डायगनली. तो ऐसे 6 पॉइंट्स आएंगे. सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट, दैट इज P विल बी इक्वल टू व्हाट? 6 डिवाइडेड बाय 36, और ये आएगा 1/6. दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. सो हियर solution we will start. Let capital X is equal to number of doublets. Number of doublets, that is what? 1 1 2 2 6 6. तो ऐसे आएंगे 6 आउटकम्स, और ये फेवरेबल आउटकम 6 डिवाइडेड बाय टोटल 36, प्रोबेबिलिटी विल बी 1/6. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विल बी इक्वल टू 6/36, मतलब 1/6 will be the probability of success. Therefore probability of failure will be 1 minus P is equal to
1 minus 6, 1 upon 6, that is 5 upon 6 will be probability of failure, that is Q. Up we will see now P of x will be equal to NCX P raised to power x into Q raised to power n minus x, which is n number of times. Okay, number of, see, a pair of dice is thrown 4 times, matlab number of trials n will be equal to what? 4. So here capital X follows binomial distribution, number of trials n is equal to 4, or probability of success that is equal to 1 upon 6. तो हमें फार्मूला कंस्ट्रक्ट करना है n इज इक्वल टू व्हाट? 4 c x p इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 रेज टू पावर x, और q है 5 अपॉन 6 रेज टू पावर n माइनस एक्स, मतलब 4 माइनस एक्स. तो ये 1 अपॉन 6 रेज टू पावर x और 1 अपॉन 6 रेज टू पावर 4 माइनस एक्स. तो इसे हम लिख सकते हैं 4cx अपॉन 6 रेज टू पावर 4, 6 रेज टू पावर 4 इंटू व्हाट? 5. 1 रेज टू पावर x इज 1, 5 रेज टू पावर 4 माइनस x लिख सकते हैं. हाँ, सो दिस इज व्हाट? P of x. Now we want to find what is the question here. Getting doublet is considered success. Find probability of 2 success. मतलब here you have to find what? Probability of 2 success. P of capital X is equal to 2, and which is equal to 4c2 upon 6 raised to power 4 into 5 raised to power 4 minus x, that is 2, which is equal to 4c2 is 4 into 3 upon 2 into 1 upon 6 raised to power 4, और ये 5 raised to power how much? 2. तो इसको हम रिड्यूस करते हैं, 2 कैंसल, इट इज 2, ये 6 आएगा. दिस विल बी इक्वल टू 6 अपॉन 6 रेज टू पावर 4, और ये 5 स्क्वेयर इज 25, विच इज एक 6 कैंसिल होगा. देन यहाँ पे आएगा 6 क्यूब, 25 अपॉन 6 क्यूब, वील राइट इट 25 अपॉन 216, 6 cube. This will be the answer. Probability of getting 2 success, that is equal to 25 upon this 216. Third question. There are 5% defective items in a large bulk of items. What is probability that sample of 10 items will include not more than 1 defective item? Not more than 1. So not more than 1 defective item, या तो 1 या 0, कोई भी defective item नहीं. So what is the probability? ये 5% defective item is probability of getting defective item is equal to what? 5%, मतलब 5 upon 100 होगा. Okay, and what is probability that a sample of 10 items will include? मतलब ये sample of 10 मतलब क्या है? That is a number of trial. That is nothing but what? Number of trial. Sample of 10 मतलब number of trial. So let's do this question number 3. Here question number 3.
there are 5% defective items. So capital X is equal to say number of defective items. Okay, number of defective items, that is our capital X. Then X follows binomial distribution with parameter n, that is equal to how much? Number of trials means number of sample, that is equal to what? 10, or probability of success P is equal to 5% डिफेक्टिव मतलब 5/100 ये आएगा. 5% डिफेक्टिव मतलब 5/100. तो ये होगा, दिस इज व्हाट P will be equal to what? 5/100 means 1/20. Therefore probability of failure will be equals to 1 minus 1/20, that is Q is equal to what? 19/20. 19/20. So let's write P of X, that is equal to what? NCX P raised to power X into Q raised to power N minus X. What is our N? 10. 10CX. P is equal to 1/20 raised to power X, or what is our Q? Q is equal to what? 19/20 raised to power N minus X, मतलब 10 minus X. So P of X will be equal to 10CX, ठीक है, अपॉन ये 20 रेस्ट टू पावर एक्स हो 20 रेस्ट टू पावर 10 माइनस एक्स, दैट इज 20 रेस्ट टू पावर 10. वी कैन राइट ओवर हियर 1 रेस्ट टू पावर एक्स 1 ही होगा, और 19 रेस्ट टू पावर हाउ मच? 10 माइनस एक्स. दिस इज P of X. नाउ व्हाट इज आस्क्ड ओवर हियर? विल इंक्लूड नॉट मोर देन 1 defective item. So will include not more than 1 defective. That means here P of not more than 1 मतलब P of X less than or equals to 1. So this will be P of X is equal to 0 plus P of X is equal to what? 1. Now here in this formula put X is equal to 0. So ये 1/20 रेस्ट टू पावर 10 कांस्टेंट मिलेगा यहाँ पे, और X इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 10C0 19 रेस्ट टू पावर 10 आएगा, प्लस 10C1 19 रेस्ट टू पावर हाउ मच? 10 माइनस 1, यहाँ पे 10 माइनस 1 होगा, दैट इज 9. यस. सो हियर व्हाट इज दिस? 10C0. 10C0 इज इक्वल टू 1 और 10C1 इज इक्वल टू 10. सो 1/20 रेस्ट टू पावर 10 एज इट इज रखना है इसमें, और ये होगा 10C0 इज व्हाट? 1. ये 19 रेस्ट टू पावर हाउ मच? 10 आएगा, प्लस ये 10C1 इज इक्वल टू व्हाट? 10, और 19 रेस्ट टू पावर 9 आएगा. सो हम 19 रेस्ट टू पावर 9 वी कैन टेक कॉमन फ्रॉम दिस. सो इफ यू टेक 19 रेस्ट टू पावर 9 कॉमन फ्रॉम हियर, ठीक है, देन इट इज 19 प्लस ये आएगा 10 and whole divided by 20 raised to power how much? 10. So this will be equal to 19 raised to power 9 into ये 190 आएगा, sorry 29 and this is what? 20 raised to power
10, so you can write the answer in this way. It is 29, that is 29 into 19 raised to power 9 upon 20 raised to power what? 10. Okay, this will be the answer. Next is question number 4. 5 cards are drawn successively with replacement. With replacement मतलब as it is with replacement word is used, so probability of every trial, in every trial probability of success change नहीं होगा, constant रहेगा, and that is expected with replacement. From a well shuffled deck of 52 cards, find probability that all the 5 cards are spade card. Only 3 spade card and none is spade card. तो 52 cards में number of spade cards are 13. So what will be the probability of getting spade card? Probability of getting spade card will be equal to what? 13 upon 52. Okay, so probability of getting spade card is 13 upon 52 आएगा. So first of all, write here capital X is a discrete random variable and it is what? Getting spade card. See question number 4. 5 cards are drawn successively. तो ये 5 cards are drawn successively मतलब ये 5 is what? Number of trials. यहाँ पे क्या है? 5 number of trials है. और 52 कार्ड में number of spade cards are 13 होते. Probability of success will be equal to 13 spade cards divided by 52. मतलब probability will be equal to 1 upon 4 और probability of failure will be equal to 3 upon 4. 1 minus 1 upon 4, that is 3 upon 4. और here 5 cards are drawn मतलब number of trials n will be equal to how much? 5. So here capital X follows binomial distribution with, यहाँ पे capital X क्या होगा? Number of spade cards. What will be this capital X? Number of spade cards. Okay, number of spade cards. हाँ, so therefore capital X is equals to X follows binomial distribution with parameter n is equal to 5 and P is equal to how much? 1 upon 4. So it will be P of X will be equal to what? NCX मतलब 5CX. P is 1 upon 4 raised to power X और Q is 3 upon 4 raised to power n minus x मतलब 5 minus x होगा. अब इसमें what is asked over here? All 5 are spade cards. तो इस फॉर्मूला में x is equal to 5 रखना है हमें. All 5 are, here first sub question is all 5. All 5 are spade cards. That is P of X is equal to how much? 5 and it will be 5C5. Okay, 1 upon 4, ये 1 upon 4 raised to power 5 आएगा क्योंकि 4 raised to power x और 4 raised to power 5 minus x, तो 4 raised to power 5 आएगा और यहाँ पे 3 raised to power 5 minus 5 आएगा which is 0 मतलब 1. NCN is equal to 1, तो ये न्यूमरेटर पूरा 1 आएगा और ये 4 raised to power 5 मिलेगा यहाँ पे मतलब 2 raised to power 10. What is this 2 raised to power 10? That is equal to 1024, which is probability of getting all 5 spade cards. 1024 is the probability of getting all
5 spade cards. फिर getting what? Number of spade cards not more than, sorry, only 3 cards are spade cards, so only 3 cards. All 5 cards are spade cards, only 3 cards are spade cards. So second sub question is what? Only 3, that is P of x is equal to how much? 3, which is 5c3 और अपॉन ये 4 रेस्ट टू पावर कितना होता है 5, ये कांस्टेंट रहेगा, और यहाँ पे 3 रेस्ट टू पावर इसमें इस फार्मूला में 1 रेस्ट टू पावर एक्स तो 1 ही आएगा, 4 रेस्ट टू पावर एक्स, 4 रेस्ट टू पावर 5 माइनस एक्स, 4 रेस्ट टू पावर हमने 5 लिखा है, 3 रेस्ट टू पावर 5 माइनस एक्स, तो 3 रेस्ट टू पावर व्हाट 5 माइनस एक्स, तो हमारा एक्स है 3, it will be 5c3 is 5c2, okay, upon ये 4 raised to power 5 it is, and here 3 raised to power how much 2, which is 9. इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 into 4 अपॉन 2 into 1, ठीक है, 5c2 इंटू ये 9 आएगा अपॉन ये 2 raised to power 10 you can write, then 2 cancel here, this is equal to 5 into 2 into 9 upon 2 raised to power 10, which is 45. ये 2 यहाँ से कैंसिल होगा, यहाँ पे 9 आएगा, 45 रेस्ट अपॉन 2 रेस्ट टू पावर 9, और इट इज 45 अपॉन, ओके, दिस इज 512 इज द आंसर. रॉन्ग आंसर है इसमें बुक में, सो दिस शुड बी द आंसर. हाँ, अब इसके बाद लास्ट वाला नन इज अ स्पेड कार्ड, मतलब नंबर ऑफ स्पेड कार्ड्स आर 0. Okay, third sub question, no, none of the, okay, getting none spade cards, that is P of x is equal to what 0, which is 1 upon 4 raised to power 5 है ऑलरेडी, और यहाँ पे क्या है 5cx 5cx मतलब 5c0 into what 3 raised to power how much into 3 raised to power 5 minus x, so into 3 raised to power 5 minus x मतलब 5 minus 0, which is ये देखो 5c0 is 1, और ये 3 raised to power 5 आएगा, 3 raised to power 5 अपॉन ये आएगा 4 raised to power 5, which is 3 raised to power 5 is, okay, 243, and 2 raised to power 4 raised to power 5 मतलब 2 raised to power 10, which is 1024, which is 1024. So yes, this is the answer. Then see here the question number 5, probability that a bulb produced by factory will fuse after 150 days. So ये 150 days जो है वो जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है. एक्चुअली प्रोबेबिलिटी इज दिस 0.05. ओके, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 सच बल्ब्स, आउट ऑफ 5 सच बल्ब्स मीन्स ये है नंबर ऑफ ट्रायल्स. आउट ऑफ 5 सच बल्ब्स मतलब ये है नंबर ऑफ ट्रायल्स. तो नन और नॉट मोर देन 1 और मोर देन 1 और एटलीस्ट 1 will fuse after 150 days of use. So let's do this. Here capital X is equal to क्या है, capital X is equal to, see, probability that bulb produced by a factory will fuse after this days. Okay, here
find out of 5 such bulbs. Okay, this is what number of fuse bulbs. Capital X will be equal to what? Number of fuse bulbs. Okay, और P is probability of fuse bulbs, मतलब probability is given already 0.05 दिया है. Therefore probability of failure मतलब बल्ब फ्यूज नहीं होने का चांसेस क्या है? 95, 0.95. ओके, 1 माइनस पी. हियर नंबर ऑफ ट्रायल्स मतलब कैपिटल N इज इक्वल टू व्हाट? सी 5 सच बल्ब्स मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स, ये होगा 5. P of x will be equal to NCx p raised to power x into q raised to power n minus x. तो n is equal to what? 5 cx और probability है 0.05 whole raised to power x और यह है 0.95 whole raised to power n minus x मतलब 5 minus x. हाँ, तो अभी इस फॉर्मूला में हमें जो रिक्वायर्ड है नन मतलब x इज इक्वल टू हमें रखना है 0. वी विल पुट ओवर हियर 0. फर्स्ट सब क्वेश्चन इज दिस. P of x इज इक्वल टू 0 किसमें? हाँ, हियर इट इज नन. फर्स्ट सब क्वेश्चन विच इज 5c0 0.05 रेस टू पावर क्या है? 0 और 0.95 रेस टू पावर 5 माइनस 0 विच विल बी, देखो 5c0 होगा 1, 0.05 रेस टू पावर 0 इज 1, तो ओनली यू विल राइट हियर 95.95 रेस टू पावर हाउ मच? 5 इज द आंसर दैट गेटिंग नन ऑफ द बल्ब इज फ्यूज विल बी फ्यूज. हाँ, फिर इसके बाद नेक्स्ट सब क्वेश्चन ये है नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 1. ओके, यस, नॉट मोर देन 1 मतलब सेकेंड सब क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 1 मतलब P ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस P of x is equal to 1. Not more than 1 मतलब P of x less than or equal to 1. ये है not more than 1. This is equal to P of x is equal to 0. आपके पास है 0.95 raised to power 5 है ऑलरेडी. अब P of x is equal to 1 रखना है इसमें मतलब 5c1 into 0.05 रेस टू पावर 1 और 0.95 रेस टू पावर 0.95 raised to power how much? 5 minus x, that is 5 minus 1 which is 4. So it is equal to 0.95 raised to power 5 plus 5c1 is 5, ये 0.05 है और ये 0.95 raised to power 4. यहाँ से 0.95 raised to power 4 you can take common. हाँ, यहाँ पे 0.95 आएगा प्लस what is this? It is 0.25 आएगा. इसको हम ऐड करते हैं 0.95 raised to power 4 और प्लस इनटू ये आएगा 0. ओके, 1.2 आएगा. सो इट इज 1.2 into
So what it will be, 1.2 into, okay, 1.2 into 0.95 raised to power 4 into 0.95 raised to power 4. दिस इज द आंसर. फिर इसके बाद रिमेनिंग टू पार्ट्स जो है, मोर देन वन और एटलीस्ट वन. ओके, सो मोर देन वन मतलब हियर see in more than one what we will do, third sub question is more than one मतलब p of x is, see what is it, the question is more than 1, so x is greater than 1, so this will be 1 minus p of x less than or equal to 1. okay, it is 1 minus p of लेस देन और इक्वल टू 1 मतलब ये पूरा यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना होगा, ये वाला, ये आंसर हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा. और फोर्थ वन इज व्हाट, फोर्थ वन एटलीस्ट वन मतलब p of x एटलीस्ट वन means greater than or equals to 1, so this will be equal to 1 minus p of x strictly less than 1, that is 1 minus p of x is equal to 0. तो x is equal to 0 प्रोबेबिलिटी ये है, तो ये प्रोबेबिलिटी हमें 1 में से सब्ट्रैक्ट करनी होगी, so that you will get this answer. So in this way all 4 parts are over of this question number 5. So remaining question, that is 6, 7, 8, 9 will do in the next video. Thank you for watching this video.